वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द शो। आज तैयार हो जाइए रिदम और बीट्स की दुनिया में कदम रखने के लिए। कहते हैं कि ओम वो प्राइमोर्डियल साउंड है जिससे ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। और आज साउंड और म्यूज़िक के एक और पहलू से हमारी पहचान कराने के लिए हमारे साथ हैं श्वेतांक गुप्ता। श्वेतांक एक ब्लूज़ गिटार प्लेयर, सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। 6 साल की छोटी एज से वो हारमोनियम और सितार बजाने लगे थे और फॉर्मली क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक सीखे। 8 साल की एज से वो रीजनली परफॉर्म कर रहे हैं। बाद में उन्होंने प्रेस्टिजियस बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक बॉस्टन से आगे स्टडीज़ की। इनका फेवरेट म्यूज़िकल जॉनर है ब्लूज़ म्यूज़िक और उन्होंने खुद का बैंड द ब्लूज़ एक्सपीरियंस फॉर्म किया है, जिसके थ्रू वो काफ़ी सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। साथ ही वो यूएस बेस्ड म्यूज़िक टेक कंपनी के साथ भी काम करते हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि म्यूज़िक कैसे हमारी वेलबींग में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जानेंगे म्यूज़िक थेरेपी की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए करते हैं श्वेतांक से थोड़ी सुरीली बातें और लेते हैं कुछ म्यूज़िकल विजडम। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हाय श्वे, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Monal. Thank you so much for having me here on Whispering Wisdom. It's an honor. माय to be प्लेजर, here. माय Thank you. प्लेजर। तो श्वेतांक, आप इतनी छोटी एज में ही म्यूजिक की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? Well, I was always interested in the music. ये मेरे घर पे एक म्यूजिक का रुझान था। मेरे मॉम एंड डैड दोनों म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने हमेशा से मेरी ये म्यूजिक एजुकेशन ये प्रमोट करी है। एंड वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी कुछ हॉबीज रहे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज रहे। तो एट द एज ऑफ 6 माय डैड गॉट मी अ हारमोनियम एंड ही लाइक हायर्ड अ टीचर। और वो टीचर वो मेरी बिल्डिंग में रहते थे, तो वो ये नीचे आके मुझे म्यूजिक सिखाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। And then slowly and steadily, Dad saw my interest in the music, and then he got me a sitar. So at the age of 7 or 8, sitar is a huge instrument to have because it's a difficult instrument. It's a very big instrument. But then I kept pushing on it. I kept learning the instrument. And then I was always playing music, so it was a very musical household. So I have to attribute it to my parents. मेरे पेरेंट्स की So वजह से मैं nice. म्यूजिक सीखा। वाह, मेरी मॉम ने भी बहुत कोशिश की, हारमोनियम सिखाया, फिर वीणा भी सिखाया, लेकिन टू नो अवेल। जी जी। सो नाइस ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स, यू नो। आई थिंक एक वो कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन होता है। बिल्कुल। हम सबकी म्यूजिक और सॉन्ग्स के साथ कितनी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं। कोई सॉन्ग हमें हमारे बचपन की फीलिंग याद दिलाता है, तो कोई इंस्पायर करता है। बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं म्यूजिक से। श्वेतांक, म्यूजिक सुनने से क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी और ब्रेन में? म्यूजिक सुनने से हमारी बॉडी और ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इट रिड्यूसेस द एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन। इट इज़ अ वेरी हीलिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और ये म्यूजिक से हमारा एक ऐसा कनेक्शन है, बिकॉज म्यूजिक इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। यू नो, हर कंट्री की एक लैंग्वेज होती है, या हर कंट्री की भाषा होती है, उनका कल्चर होता है। बट म्यूजिक एक ऐसा कल्चर है जो पूरे विश्व का है, जो हर किसी का है। So music is life, you know, it's healing, is the ultimate art form and is regarded as the most superior art form. Right, it is. Without words भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो through music, Definitely. just like art. Definitely, 200%. म्यूजिक थेरेपी क्या है और किसने क्रिएट की? Music therapy, you know, so is basically a healthcare profession that uses music and musical activities to address the physical, emotional, cognitive and social needs of the individuals. Music therapists work with people of all ages, from infants to the elderly, in variety of settings such as hospitals, rehabilitation centers, schools and private practices. And so music therapy has been in the cultures for many decades. It has been in many cultures. Even if we talk about the Indian culture, so we have historical records of music therapy and people using music as a tool to heal and bring the community together. Okay. But the earliest known reference to music therapy appeared in 1789 in an unsigned article in Columbian magazine titled
music physically considered. So in the early 1800s, writing on the therapeutic value of music appeared in two medical dissertations. The first Okay. published by Edwin Attlee in 1804, and the Hmm. second one was published by Samuel Matthews. And they were both students of Dr. Benjamin Rush, a physician and psychiatrist who was a Okay. strong proponent of using music to treat medical diseases. तो Hmm. 1800 में हमने ये म्यूजिक थेरेपी का फर्स्ट ये रिकॉर्डेड इंटरवेंशन मतलब वो पाया गया था। Hmm. ये ब्लैकवेल आइलैंड जो न्यूयॉर्क में है, तो वहाँ पे Hmm. एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ ये म्यूजिक थेरेपी का, और द डॉक्टर्स जस्ट गॉट सम वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, दैट्स नाइस। सो जी हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक थेरेपी एंशिएंट टाइम्स में हमेशा से रही है, बट उसको जी साइंटिफिकली स्टडी और प्रॉपर्ली यूटिलाइज तब से करा जाने लगा, राइट? Exactly. So it was so there in the 18th century, so late 1780s and 89 it was there. But हम्म। so just about the beginning of the 19th century, so music therapy became a proper medical thing based on हम्म। evidence and based on the scientific researches. ओके, तो आज भी मतलब वो काफी यूज हो रही है म्यूजिक थेरेपी 200%, so music मेन therapy, स्ट्रीम I में? mean, so mainstream culture में music therapy पूरी तरीके से आ चुकी है. So हम्म। like hospitals and practicums in the US and the UK are definitely using music therapy to bring patients out of the comatose and ओके। severe trauma. हम्म। And the goal of your music therapy is to use music as a therapeutic tool to हम्म। help individual achieve specific treatment goals related to their physical, emotional, cognitive, and social functioning. ओके। So this may include reducing anxiety or pain, improving your mood, आपकी physical strength and coordination को improve करते हैं, आपके communication skills को improve किया जाता है, और social interaction को भी improve किया जाता है. अच्छा। And they use methods like music, singing, playing instruments, improvisation, songwriting to really treat all sorts of your patients. मैंने सुना है ऑटिज्म को रिड्यूस करने के लिए या उस पेशेंट्स को काम करने के लिए यूज होता है। जैसे ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो Definitely. कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल एबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है, और अफेक्टेड Yes, लोग दूसरों से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और सोशली इम्पेयर्ड होते हैं। तो definitely. ऑटिज्म में कैसे यूज होता है म्यूजिक थेरेपी और कैसे हेल्प करता है पेशेंट्स को? Yes. So music therapy has been shown to be a very useful intervention for individuals with autism spectrum disorder. It's called ASD. And autism is basically a neurodevelopment disorder characterized by difficulties with social interaction, communication, and repetitive behaviors. राइट। Individuals with ASD may also experience sensory processing challenges such as hypersensitivity to the sound. ओके। So, your music therapy, it can help address many of these challenges by providing a non-verbal means of communication and social interaction. तो जिस किसी को भी अगर ऑटिज्म है तो वो किसी से सोशली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी से ये बातचीत नहीं कर सकते हैं, पर जैसे ही वो म्यूजिक आता है तो so they don't need to use the your verbal means of communication, because your music already with its frequencies, with its healing powers, with its interaction with the certain parts of the brain, so it helps provide them a platform through which they can communicate and engage with others in a predictable and in a very structured way. ओके। And I would love to tell you about a research जो कि हालांकि में हुई थी. So a study published in the Journal of Music Therapy found that children with ASD who received 12 weeks of music therapy showed significant improvement in social communication skills compared to the control group. ओह, वेरी नाइस। Yes. आई थिंक ये जो भी पेरेंट्स गो थ्रू कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़, जो भी स्पेक्ट्रम पे कहीं पे भी हों ऑटिज़म में, मतलब माइल्ड टू सिवियर, उनको डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि ऑटिज़म के लिए म्यूज़िक थेरेपी ऐसी चीज़ है जो वो घर में भी आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब थेरेपिस्ट की एडवाइस के बेस पर, ऑफ कोर्स Definitely. वो घर पे Definitely. भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक 200%. एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट ऑल्सो, एंड बिटवीन द चाइल्ड एंड अदर पीपल Yes. म्यूजिक यूज Yes. करके। सो आई थिंक दैट इज रियली लवली। It is fantastic and it's been proven to be effective. मैंने सुना है म्यूजिक थेरेपी और भी डिजीजेस के हीलिंग में यूज होती है, जैसे जी. कैंसर है एंड Yes. ऑल्सो फॉर स्ट्रेस। तो आप कुछ उनके बारे में बताएंगे? Definitely. So music and cancer is like a cause which is very close
near and dear to my heart because it's a very non-invasive sort of a procedure. So when Right. you are inflicted with a disease like cancer, then you have so many invasive procedures. You have chemotherapy, you have Mm. your recreational your marijuana uses and like other drugs, so which are Mm. proving to be helpful. But music therapy is a very non-invasive, non-pharmacological intervention that is Right. shown to be effective in improving the quality of life and Mhm. reducing the symptoms in cancer patients. So cancer is a complex disease that can cause physical, emotional, and psychological distress. And बिल्कुल। your music therapy can provide a means of addressing these issues in a very holistic ways. हुँ, हुँ, And there have been many research going on around the world in the medical community. A हुँ, study which was recently published in the Journal of Pain and Symptom Management हुँ, हुँ, found that music therapy significantly reduced pain and anxiety in patients with cancer-related pain. So, हुँ, so music therapy can be also used to promote relaxation and reduce stress with the cancer patients. जब वो म्यूजिक को सुनते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, so हुँ, it activates their parasympathetic nervous system, which राइट। can lead to a decrease in heart rate, blood pressure, and music tension. हुँ, In addition to its effect on the physical symptoms, music therapy can also have psychological benefits for the cancer patients. So, like the cancer patient are going through like an emotional trauma, हुँ, and so they have the feelings of grief, loss, and uncertainty. But हुँ, your हुँ, music therapy can provide a means of emotional expression and help those patients. It can also provide a sense of social connectedness and provide a source of hope and inspiration. ट्रू। So doctors and nurses are using music therapy as a means for the cancer patient. And so back in my college at Berklee College of Music in हुँ, Boston, so there was this major in the college called music therapy, and some students were pursuing that major, and हुँ, then they हुँ, get the certification. तो उनका ओके। certification program होता है, and every week they are supposed to go visit the hospital, play the instruments for the cancer patients, play the instruments for people who are going to PTSD and हुँ, trauma and everything. And week after week, so they've been tracking the progress, and I consulted some of the friends, हुँ, and हुँ, so they were for real, and they said patients are showing a sign of improvement and the brain activity. So there have been an increase in the brain activity too. राइट। So it's definitely helping a lot of people with stress, cancer, PTSD, the post-traumatic stress disorder. So your music therapy has various benefits. ट्रू। श्रेया, आई वांट टू शेयर, मैंने इसका लाइव एग्जांपल मेरे आसपास ही देखा है। देयर इज दिस अंकल, अ फ्रेंड्स फादर, हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड अंकल इज अ बिग म्यूजिक लवर। वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कैरियोके सेशंस रखते हैं। मतलब ही सफरिंग, ही वाज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल पेन मोर अर्लियर, वो रिड्यूस हो Yes. गया, लेकिन जो इमोशनल ट्रॉमा है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से गुजरने का जो ट्रॉमा होता है, एंड वही जैसे आपने कहा कि अनसर्टनिटी है, फिर द इमोशनल पेन विच दे गो थ्रू, द Yes. साइकोलॉजिकल पेन, वो फिजिकल पेन से कहीं बढ़कर होता है। लेकिन यही बात मेरे फ्रेंड ने भी शेयर की और मैंने भी देखा है कि अंकल्स फेस जस्ट लाइट्स अप, व्हेन ही गोज थ्रू दो सेशंस, व्हेन ही लिसन्स टू सम म्यूजिक, या अपने फ्रेंड्स के साथ वो कैरियोके सेशंस करते हैं। तो यस, इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, अनडाउटेडली। Yes, yes, because it just gives you healing. It doesn't take away हुँ, anything from you. With any pill, with any treatment, there are going to be side effects. But with the हुँ, music राइट। therapy, there are so no side effects. The only side effect is happiness ओह and healing. यस, दैट वाज़ सच अ So नाइस स्टेटमेंट। thank you, thank you. आई That is very थिंक true. हम सबको एक वो डोज़ ऑफ हैप्पीनेस वैसे भी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल. Without the dose of happiness, life is very non-spicy. ट्रू। कोविड ने सबको मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कराया कि कितनी इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। और एक्चुअली ये पीरियड में कई लोग फियर और डेथ के लॉस से और ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो इसके अलावा भी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन कभी भी कोई फेस कर सकती है। तो ऐसे में म्यूजिक से क्या सपोर्ट मिल सकता है? So like people are going through the trauma every single day. हुँ, Like a body is a very complex place, and so music therapy can be a powerful tool for addressing trauma and the side effects. राइट। So music therapy can also provide a means of addressing these effects in a very safe and supportive environment. हुँ, Now the हुँ, researchers have, so there are like a lot of the various researches that are done in the field of cancer, in the PTSD, हुँ, and stress management. So music ओके। therapy can be an effective
tool in reducing symptoms of PTSD, the post-traumatic stress disorder, Hmm. a condition that can develop in response to the trauma. So जब आपका Right. trauma से आप जब गुजर रहे होते हैं तो आपका brain shut down हो जाता है. It slows down all the activities, all the active activities in the brain. Okay. But after the stress, but the stress that comes after like an accident or a trauma, which is the Hmm. post-traumatic stress disorder, Hmm. so which is a condition that can develop in response to the trauma. Right. So a study which was published in the Journal of Traumatic Stress Hmm. found that music therapy was effective in reducing PTSD in combat veterans in the army and the military. Hmm. So engaging in any sort of musical activities such as singing or playing instrument can promote relaxation and reduce stress. I mean, the story of which you just told me about the uncle, हाँ. so his face just lights up because that's a very intrinsic sort of a thing. True. So you're going through so much stress, and stress को deal करते करते एक post traumatic stress disorder भी होता है. So exactly. So music therapy can provide a means of emotional expression and help individual process their experience of trauma. Songwriting, for True. example, so it can provide a means of expressing feelings and thoughts that may be difficult to put into words. True. कि मेरी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ और मुझे शायद कहने में एक ट्रॉमा है या फिर मतलब सोसाइटी में एक लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि वो मेरे प्रॉब्लम को वो समझ सकते हैं. So in that situation, songwriting can be helpful, or journaling in a diary can be helpful because you're just expressing yourself. True. And the music therapy is one such tool that it is used as a means of building connection with others and promoting social support. So True. yeah. I think इतने beautiful songs हमें मिले हैं through people's pain, right? जी. जो उन्होंने express किया through songwriting, through the music that they created along with the songs. Definitely. Definitely एक बहुत beautiful way है expression का. But of course, there is a science behind it, but also it is an art and a science both. ये definitely एक art तो है ही, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा science भी है. जी. So क्या कोई ऐसे म्यूजिक में कोई स्पेसिफिक चीजें सुनने से ज्यादा इफेक्ट होता है या पर्टिकुलर टाइप का इफेक्ट होता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ म्यूजिक में नेगेटिव इफेक्ट होता है, ऐसा भी है? Definitely. So as we were discussing, so there are a variety of the music online on YouTube, Spotify, Apple Music, etc. So there's a music genre which is called the meditative music, which like uses different frequencies. So we have music in the 432 hertz, which is a frequency of healing and which is a frequency of cure. Then so most of the music that we listen to on the radio is on 440 hertz. And so listening to music can basically activate multiple regions of the brain, including those involved in the auditory processing, emotional processing, and reward. So this can lead to release of neurotransmitter such as dopamine, which can improve mood and promote feelings of pleasure and well-being. Right. And in addition to the effects on the brain, music therapy can also have physical effects on the body. For example, playing an instrument can promote hand-eye coordination. It can refine the motor skills, while rhythmic movements to music can improve coordination and balances. Right. So Through dance, music I therapy suppose. through dance, through exercising, through so playing your various musical instruments like drums, keyboard, so guitar. I'm engaging both my left and the right hand. So like it's actually so improving the hand-eye coordination, is refining the motor skill, and also so music therapy has been shown to be effective in the long term by reducing pain and anxiety in patients undergoing all the medical procedures, because the effects on the release of endorphins and the relaxation, the response is so high. So like music really helps all those kind of people. It's the post healing. So the healing also happens in the hospital, like you have like an invasive procedure or like a surgery, but after that healing is done, so there is still a pain. So instead of just involving yourself too much in the Western medicine and taking all the antibiotics to kill the pain, I would so much rather like activate all those parts of the brain which can release the dopamine and all the neurotransmitters. True. True. I have a personal experience with this. जब मैं मेरे सन को एक्सपेक्ट कर रही थी, तब इट वाज अ प्लान्ड ऑपरेटेड सिजेरियन सेक्शन. तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ पर जब ऑपरेशन, बिकॉज आप होश में होते हो जब ऑपरेशन होता है, हालांकि आई बिलीव कि कोई भी चीज़ आप सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा सुन रहे हो, तो इवन इफ यू आर अनकॉन्शियस,
लेकिन चलो मैं तो कॉन्शियस थी एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र जो है विथ देयर वाज दिस फ्लो ऑफ दैट मंत्र विथ म्यूजिक कि आप वो जी, प्ले करिएगा एंड आई मस्ट टेल यू इट वाज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस कि मैं रोने लगी and the doctors वाओ! they were asking me time and again कि, are you feeling any pain, is something wrong, and I जी, couldn't explain because I wasn't able to talk कि these are tears of joy. यस, तो वो एक इतना ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस था एंड आई पर्सनली फील कि मैं बहुत जल्दी रिकवर भी हुई आफ्टर जी। गिविंग बर्थ बिकॉज ऑफ दैट कि वो इतना एथरियल एक्सपीरियंस था आई वुड It was a से. very surreal and ethereal like experience, Yes, and so I mean the recovery just happened fast, and also the moment in which it happened, it was so vivid for you. It yes, was yes. such a lively and vivid experience Hmm. that your physical health just improved. If I'm so not wrong in assuming that. यस यस और अभी भी जैसे ही वो सीन मेरे आगे वापस से प्ले होता है इट गिव्स मी गूज बम्प्स सो Wow, दैट इज द wow, इम्पैक्ट. that's beautiful. Yeah, so that's beautiful. I'm so glad to hear that you played live music during the time of childbirth. Wow, yeah, that's fantastic. I never get to hear that. It's the first time I'm hearing that, so that's fantastic. ओह कि क्या रेगुलर स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव करने में भी हेल्प कर सकता है म्यूजिक. 200%. So, like all my friends, so I'll just give you a very private and a personal example. हम्म. So, usually all my friends finish their work by 8 p.m. or 9 p.m. in the evening. And हम्म. after that, they all wanna you come over to my place after finishing their work, because at my place I'm always playing the music. So I'm ओह playing नाइस. the guitar, I'm playing all sorts of instruments for them, and they look forward to coming to my place because so it's the place where there is a safe space, and I'm just playing हम्म. music to let go of the stress and the anxiety of the daily life, because it's so very important, especially in this day and age where the lifestyle has become so sedentary. ट्रू. अभी सबकी लाइफ एक स्क्वायर बन गई है कि वो सुबह उठ के अपने काम पे जाना है, 8 से 9 घंटे अपना काम करना है और उसके बाद जाके सो जाना है. पर अगर उसके वेरी बीच में ट्रू. कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है कि वो जिससे मेरे न्यूरोट्रांसमीटर को एक किक मिले या फिर मेरे डोपामीन वो हम्म. रिलीज हुए, तो so the stress levels are like always going to be high, and those stress levels are actually contributing to the early death of the youth, you know राइट. like a lot of the unexpected heart attacks, strokes, people are developing cancer, so because of all the stress that are taken inside their body, and their cells on a molecular level are stressed out. ट्रू. So like music definitely helps people, and people who are going through the depression. So मैं अभी कॉलेज में इतने फेस्टिवल्स प्ले करता हूँ, इतने सारे लाइव शोज में प्ले करता रहता हूँ, तो all the youth they come up to me and they come to all my shows. So I ask them about their experience कि आपको शो कैसा लगा, आप इतने ये बार विजिट करने आ रहे हैं मेरे शो में. तो उन्होंने कहा कि they are going through the depression and anxiety because of their college life and their future expectations and the parental expectation, and music is their only escape. राइट. तो उनकी उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है और वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ये मेंटल हेल्थ, वी आर सीइंग लाइक अ ग्रेट राइज in mental health since COVID and everything, which is a fantastic thing. But we as a country still have a long way to go. Yeah, exactly. And people like you and others are also contributing to the mental well-being and mindfulness, which I have to give you a huge round of applause for. थैंक यू सो Uh, मच. Exactly, but still, there's a huge amount of youth, so which is isolating themselves in their bedroom because of the technology, because of the virtual things which are happening around us, the VR technology, the XR technology. So like so everything is, so we are headed towards a metaverse. So it's not a real world; it's all a digitally created, AI generated sort of a world. ट्रू. So obviously, the youth and the kids are going to have a feeling of isolation and alienation, because they are not having any social interactions with their peers, because they are getting everything on their laptops. So वेरी ट्रू. I think the music concerts and the community hangs are a way to go, and music is definitely helping the youth and also the old people to get out of their funk, and just you go to a very blissful and a very calm place. ट्रू. म्यूजिक आई थिंक हर एज हर कल्चर का पार्ट रहा है. Definitely. कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई भी ऐसा कल्चर सुनने को नहीं मिला है जिसका कोई म्यूजिकल सिस्टम नहीं रहा हो. जी. एंड हर एज मे बी दे डू नॉट लाइक द म्यूजिक ऑफ अदर एजेस बट उन्हें उनके पास खुद के एजेस के म्यूजिक जरूर हैं. और मैंने तो ये बिल्कुल. देखा है एटलीस्ट इन आर एज ग्रुप, जैसे हमें जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, especially movie songs from say 60s 70s 80s
90s के बाद नहीं कहूँगी, but mostly जी, we remember those more compared to यस, the newer ones. यस, आई डोंट नो वो उसका रीज़न क्या है, इधर रिपीट वैल्यू रही है हमारी लाइफ में, या हम उनसे मे बी हमारी मेमोरीज कनेक्ट कर पाए हैं, यू नो दोज ग्रोइंग अप मेमोरीज. बहुत कुछ हो बिल्कुल, सकता है, कुड बी वेरियस फैक्टर्स, बट जी, यस, all of it. And how, you know, like certain activities around music, like playing अंताक्षरी. I think हर इंडियन बच्चे ने अंताक्षरी तो खेला ही है, right from their बिल्कुल, childhood. Then, you know, 200%, karaoke, be it, you know, bonding over that, and be it music or be it sound based, there are so many activities and so many ways to connect with yourself as well as with the people around you. बिल्कुल। तो बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है हमारी लाइफ का. मतलब और किन किन वेज में इसको डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स लिसनिंग टू म्यूजिक एंड द म्यूजिक दैट यू लाइक इज अ नो ब्रेनर कि हम वो कर जी, ही सकते हैं, बट आई फील हम ये जानते हुए भी कई बार नहीं करते हैं. सो बिल्कुल। कैसे, मतलब कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. There are many different ways to incorporate music into your daily life. So if you are going to the gym, or if you're exercising for 15-20 minutes or even 30 minutes, you can listen to some meditative music and the healing music. जब मैं ये बहुत छोटा था, जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में था, तो मेरे मॉम रोज सुबह घर में ऑन द सराउंड साउंड सिस्टम गायत्री मंत्र प्ले करते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज सो वेरी विविड इन माय ब्रेन कि मैं जब भी रोज सुबह उठ के आता था तो मेरे घर में गायत्री मंत्र प्ले होता था. एंड उसके बहुत हीलिंग पावर है. एंड आई वाज True. सीइंग द सनराइज विद द म्यूजिक, यू नो, सनराइज विद द Wow. गायत्री mantra, and the sun is coming, the air is fresh. So just taking like 15-20 minutes out of your digital world, out of your phone or out of your tablet and the laptop, and just listening to the healing power of the music, and just so not even thinking about anything. So don't even plan your day, you don't even think about anything. Just take 20 to 30 minutes out, and if you do that for 2 weeks, you know, so just you 1 to 2 weeks, if you just do that, I guarantee you 200% you're not going to go back. And then you won't be able to start your day without this activity, True. because it's just emptying your mind, it's just emptying your brain. So we don't want all that trash in our brain every day when we wake up, you know, to think about things, to be on the social media, to Right. continuously be texting people or emailing people and chasing people. We have the office hours for that, we have enough time in the day for that. So I think you're listening to music for 15-20 minutes, it really helps. Then you make in a weekend plan where instead of just going to a restaurant like every week, people can also try to go to a music concert, or some like activity that they like which involves the music, you know. The live gigs is like one of the ways to go. There are so many concerts which are happening in the summer, so you can do so those kind of activities. And when you so get together with all your friends, you check out music, you can share music with each other. So that's my love language, you know. So if I want to show my affection to somebody, I just send them a playlist of the music that's Oh, going to how suit sweet. it. So there are small ways that you can just incorporate your music into your daily life, and you don't even have to take like a big chunk out, you know. So those are the ways. Really nice. I think very thoughtful जैसे आपने शेयर किया, because I think हम शायद अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं लाइफ में. हम सब, Exactly. you know, those doing, we are always doing things and never being, never staying with Exactly. ourselves. And Exactly. music एक बहुत powerful way है to just be with yourself. And जी. the moment we decide कि हमें हमारी लाइफ और हमें खुद को प्रायोरिटी बनाना है, आई एम श्योर हम जी. म्यूजिक के लिए एक स्पेस लाइफ में बना ही लेंगे. जी, So बिल्कुल. that was wonderful, Shwetaank, and thank you for your wonderful insights on this topic. और म्यूजिक लाइफ को इतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, ये मुझे आज और अच्छे से पता चला. Thank you so अब से much. मैं भी अपने रूटीन में रिलैक्सिंग म्यूजिक के लिए स्पेस बनाऊंगी. I'm so glad to hear that. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स कि आप सब भी किसी न किसी तरह से म्यूजिक से एक रिलेशनशिप बनाइए. और आप अगर श्वेतांक से पर्सनली कनेक्ट होना चाहें या उनके बैंड को एंगेज करना चाहें, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 क्वेश्चन राउंड. श्वेतांक, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका रिप्लाई आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है. बिल्कुल. Wow. Okay. सो रेडी? Rapid fire. Yes. यस, रैपिड फायर. ओके, आपको पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का एक चांस मिले तो आप कौन से डेड सिंगर से मिलना चाहेंगे? That singer that I would love to meet
if I get to time travel, is the guy you're right behind me, Mr. Jimi Hendrix, जिमी हेंड्रिक्स, from the 1960s. राइट। आपको चॉइस दी जाए तो आप एक अमेजिंग वॉइस मिलना चूज करेंगे या वर्ल्ड के सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की एबिलिटी? Oh wow, that's such a hard question. It's such a hard question. I think we have many amazing singers in this world already. So I would love an opportunity to play all the instruments in the world. That's वाओ, amazing. नाइस। इन 3 इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कनेक्शन फील करते हैं, उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। सितार, Love, हारमोनियम, childhood, गिटार, life. नाइस। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपकी बाथरूम सिंगिंग की प्लेलिस्ट में रिपीट मोड में होता है? As a bathroom singer, I would have to choose the song "Thrill Is Gone" by Mr. B.B. King. ओके, नाइस। अगर आपको अपने आप के बारे में कोई सॉन्ग लिखना हो तो उसका टाइटल क्या होगा? Wow. अगर मुझे अपने खुद के बारे में "Sympathy with the Devil." ओह, नाइस। व्हाई द It's डेविल? already a song. Your sympathy to the devil by the devil, you know. But I hope not. I hope I'm not your devil. I hope I'm not perceived as a devil by the people. क्या फर्क पड़ता है? इट्स हाउ यू परसीव योरसेल्फ व्हिच मैटर्स। Exactly. You were absolutely right about that. That was really wonderful, Shwetaank. You helped us understand music so deeply. और इतना कुछ आपने शेयर किया, आपने सिखाया. Thank you so much for that. Thank you so much, Monal, for giving me this opportunity to be on your wonderful podcast. And I had such an amazing time with you, an amazing time curating and researching on the field. And you are doing a wonderful job on the mindfulness and the mental health. So kudos to you, and I'm so proud of you. Oh, thank you. And it was totally my pleasure. Thank you so much. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।